Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. Today we are going to solve the remaining questions of exercise 16b. So starting our lecture with question number 4, which states that 30 mangoes picked at random from a consignment way. This block contains the weight of the mangoes that are picked at random, and consignment means a batch of goods delivered to someone. So these are the weight of that mangoes, and we have to form our frequency distribution table using the given data set. So what is frequency distribution table? Frequency distribution table is a table that shows class intervals and their corresponding frequencies. So for the frequency distribution table, we have to follow a certain procedure. We need to form 3 columns in the table named as class intervals, frequency, and telemarks. Now the point is how we get those columns values. So moving on to the solution, a frequency distribution table will be look like this. We have a column for the class intervals, we have a column for the frequency, and then we have a column for the telemarks. This is the frequency distribution table. Now we need to fill these columns so that we have a full frequency distribution table for the given data set. For the frequency distribution table, we have to calculate range of the data. Why we need to calculate the range of the data? Because we have to specify the range or the boundary of the class intervals. So calculating the class size or class width of the class intervals, we need range. So before calculating the range, move to the question. What is range? Range is the difference between the highest and the lowest value. Whatever the highest value from your data point and whatever the lowest value or the smallest value of your data set, you need to calculate the difference between these two values, so we get the range. So looking over there, we have the highest value of 142 because there is no other value that is greater than 142. So highest value is 142 for this data set. Now we are looking for the smallest value. So smallest value is 68 because there is no value that is less than 68. So we have the highest value which is 148 and a smallest value which is 68. So we are going to find range. So range is highest value divided lowest value 142 minus 68. So we has a range of 74. Now we have a range of 74. We need range to calculate the size width. First of we calculate how many classes or how many class intervals we need to make. क्लास इंटरवल्स जो हैं वो आपके डाटा पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, आपका डाटा सेट पे डिपेंड करते हैं. आप डाटा क्लास इंटरवल्स जो है वो 5 बनाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस. 6 बनाना चाहते हो, 8 बनाना चाहते हो. जैसे ही क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसके ऊपर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी लुक लाइक अ बिगर टेबल. एंड जैसे ही आपका क्लास इंटरवल्स का जो नंबर है वो स्मॉल होगा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उतना ही कंजेस्टेड होगा और उतना ही छोटा बनेगा. तो हम जो है वो क्लास साइज के लिए जो है वो रेंज निकालना हमारे लिए ज़रूरी था. नेक्स्ट वी कंसीडर दैट लेट वी टेक अ क्लास नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 5. I want to take 5 class intervals. It means that जो class interval का column है उस पर मुझे 5 number of classes, 5 class intervals चाहिए. So I took here number of class intervals is equal to 5. You can take 6, you can take 7. It's your choice. Now we need to find class width or class size. This is the main concern. Why we need to calculate range and why we calculate the class intervals. So what is class width? Class width is the range in the class interval column that bounded some numbers in that range. You have so many numbers in the data set. Some of the numbers are bounded between these two numbers, are numbers smallest number and the highest number, and there are numbers that are bounded between these two numbers. So that is the class width or class size. So 74 is the range. When range divided by the number of class intervals, we get the class width or class size for the data set. So 74 when divided by 5, we get 14.8, and 14.8 is in decimal, so we approximate 14.8 into 15. So you can see that our class size or class width is 15. So now moving towards the table here. Filling up this column for the class interval, so our class size is 15.
क्लास इंटरवल्स का जो फर्स्ट वाला आपका रो है उसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमेशा आपका डाटा पॉइंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 68 फॉर आवर डाटा सेट, सो आवर क्लास इंटरवल फॉर द फर्स्ट entry will start from 68. Now including 68 we have to cover a distance of 15 to reach the ending point of that range. So 68 को इंक्लूड करते हुए 15 तक का डिस्टेंस कवर करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है 82. दिस इज द वन क्लास इंटरवल. नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको क्या करना है कि जो 68 है उसके अंदर आपको ऐड करना है अपना क्लास विड्थ या क्लास साइज. क्लास विड्थ जो है हमारे पास 15 है तो 68 इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. 68 के अंदर जब हम प्लस करेंगे 15 को सो वी गेट 83. सिमिलरली जब हम 83 के अंदर प्लस करेंगे 15 को वी गेट 98. सिमिलरली व्हेन वी ऐड 15 to 98 we get 113 and similarly we get 128. We have to make 5 classes, so count it 1 2 3 4 5. These are the 5 number of classes, we don't exceed further. Now 68 to 82 we get 82 including the 68. 68 से 82 में जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे इंक्लूडिंग 68 एंड इंक्लूडिंग 82 दिस विल बी 15. नाउ 82 add 15 to this 82 we get 97. The same procedure which we follow over there we need to follow over there. So 82 plus 15 equal to 97. Then we need to add 15 to 97 which will result into 112, and then 112 plus 15 will be 127, and then 127 plus 15 will be 142. Now what is the point? 142, here you looked at 142 is the highest value in our data set. 142 से बड़ी कोई वैल्यू हमारे डाटा सेट में है ही नहीं. और जब हमने क्लास इंटरवल्स को कैटेगराइज किया है तो जो हमारा क्लास इंटरवल का फर्स्ट एंट्री थी वो स्टार्ट हो रही है 68 विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आवर डाटा सेट, और क्लास इंटरवल का जो आपके पास एंड हो रही है वैल्यू वो हो रही है 142 पे विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आवर डाटा सेट. इट मीन्स डैट हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू डाटा सेट की और हाईएस्ट वैल्यू डाटा सेट की वो दोनों इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बन चुके हैं. लेकिन ये कंपलसरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो आपके डाटा का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट डाटा पॉइंट है, वो लाजमी है कि आपके पास यहाँ पे एंडिंग पॉइंट जो है वो उसी डाटा पॉइंट पे हो जो हाईएस्ट वैल्यू है. सपोज 142 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे होते तो अगर आपके पास 145 भी आ जाता है यहाँ पे तो डैट इज़ नॉट एन इशू. यहाँ पे फिक्स नहीं है. आपने ज़रूरी नहीं कंसिडर करना है कि यहाँ पे आपका डाटा सेट का जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ही आना चाहिए. उससे बड़ा भी आ सकता है, इवन दो वो नंबर भी आ सकता है जो आपके डाटा सेट में है ही नहीं, लेकिन वो एक रेंज के लिए स्पेसिफाई कर देगा कि उस रेंज के अंदर कितने डाटा पॉइंट्स आपके सेट के अंदर है. So we are done with the class intervals. These are the class intervals we have made. There are total 5 class intervals and each class interval has a distance of, has a class size of 15. Now moving towards frequency. What is frequency? Frequency क्या होती है आपके पास? Frequency is the number of data items within a particular class interval. अब जैसे कि आपके पास ये class interval है which ranges from 68 to 82. आपके पास जो डाटा है वेट ऑफ द मैंगोज वो स्कैटर्ड फॉर्म में है. हर एक मैंगो जो भी मैंगो पिक किया गया उसका एक रैंडम वेट जो है वहाँ पे शो किया गया उस ब्लॉक के अंदर. आपने जो क्लास इंटरवल डिज़ाइन किया है अपने डाटा के अकॉर्डिंग आपको उस रेंज के अंदर अपने डाटा के पॉइंट्स को ढूंढना है जो स्पेसिफिकली इस डाटा के इस क्लास इंटरवल के अंदर कंसिडर हो रहे हैं. उसका जो नंबर होगा वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी. See, 68 to 82. We have 68 to 82 is our first range. We are going to see our data where we have our question. Okay. 68 to 142. 68 to 82 we need to find the numbers that fall in that specific range. So 68 से 82 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं हमें वहाँ इस ब्लॉक के अंदर से उनको हाईलाइट करना है. See, we have the very first number which is this 68. Then we have
74, then we have 81, then 75, then 78, and then this is this is 85, 78, sorry, 85 is not included, 85 is not included, 78, and this is done. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then this one 82, this is 7. सो हमने वो सारे नंबर्स इस डाटा में से कलेक्ट कर लिए हैं जो हमारे 68 से 82 की रेंज में फॉल करते हैं. सो व्हेन वी काउंट देम दे आर टोटल 7. सो फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास इंटरवल इज 7 है. सिमिलरली जो 83 से 97 की रेंज में आपके पास डाटा पॉइंट्स आप उनको काउंट करोगे, उनका नंबर आपके पास 6 होगा. सिमिलरली फॉर द रेंज 98 to 112 we have data points total which are in number 9. Similarly for 113 to 127 we have 4 data points that lie in that range, and 128 to 142 we have 4 data points that lie in that range. सो इन क्लास इंटरवल्स के रिस्पेक्ट से जितने नंबर्स जो हैं वो इस रेंज में फॉल कर रहे हैं वो यहाँ पे हैं, और वो इस क्लास इंटरवल की है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. देयर आर 2 कॉलम्स व्हिच वी हैव फुलफिल्ड. वन इज द क्लास इंटरवल, सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी. 2 steps we are done. Now moving towards the tally marks. टेली मार्क्स क्या होता है आपके पास? टेली मार्क्स जो है हम फ्रीक्वेंसी को देख के बनाते हैं. फ्रीक्वेंसी के लिए टेली मार्क्स जो है हम ड्रॉ करते हैं. टेली मार्क्स को हम हैश मार्क्स भी कहते हैं. दे आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरल यूज्ड फॉर काउंटिंग. हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि 4 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना होता है. यू नीड टू ड्रॉ 4 वर्टिकल लाइंस मस्ट. और जो 5th वाली लाइन होती है उसको हमें उस पर स्लांट लाइन ड्रॉ करनी होती है. 4 वर्टिकल लाइंस एंड द 5th लाइन अक्रॉस द प्रीवियस 4 लाइंस. ये 5 का एक ब्लॉक बन गया. आप 5 से एक्सीड नहीं कर सकते. इफ़ योर नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5 यू नीड टू मेक अ पेयर ऑफ 5 एंड देन वट एवर नंबर इज लेफ्ट यू नीड टू ड्रॉ इट सेपरेटली. सो फॉर द केस ऑफ 7, for the case of 7 here, how we draw the tally marks for this? 7 is greater than 5, so we draw 1, 2, 3, 4 vertical lines, and the 5th line will be across the previous 4 lines. That is a little slant line there. So this is a pair of 5, and what number is left? 2, so we have to draw 2 vertical lines more. So this is the tally mark for the frequency of 7. Similarly for the 6, what we do? 1, 2, 3, 4, 5, 5th line will be like this. So this is 5 and what will be left? 1, so 1 is over there. So we need to make this tally mark like this. Here is the tally marks for 7, then 6, for 9, and then 4. See, 4 is less than 5, so we have to draw 4 vertical lines, even 3 vertical lines अगर frequency 3 हो, 2 vertical lines अगर frequency आपके पास 3 है और 1 अगर frequency 1 है. 5th line will be always across the previous 4 lines like this for the case of 7, and for the case of 6, this and this. So this is the final table for the frequency distribution of the 30 mangoes picked at random from a consignment. We have class interval, we have frequency, and we have tally marks. This is the required frequency distribution table. Hope you get what the solution or how to get the frequency distribution table out of the given data sets. Moving on to the next question, which is question number 8. It states that the following table shows that marks obtained out of 25 by the students of class 8 in English determine the average marks obtained by the students. Okay, you have given with the table that divides into 2 further rows like marks and number of students. Here we have marks and here we have number of students. So marks are out of 25, which means that students gain 20 marks out of 25 in that English text. Then marks which students usually get are 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21 and 22. There are no other marks
than these numbers which are already mentioned. So number of student, what is this number of student? What is this number of students? This number of student is like how many students have gained mark 11 in their English test. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने इंग्लिश के टेस्ट में 11 मार्क्स मिले हैं? So there are 4 students who got 11 on their test. Similarly, how many students who got 13 on their test? So there are 3 students in the class who got 13. Similarly, there are 7 students who got 15, 16 students who got 18, and 4 students who got 19, and so on. So what this number of students represent? This number of students represent the frequency. Why this is frequency? Because how many times 11 is repeated? So there are 4 times 11 is repeated. 11 marks जो हैं 11 marks जो हैं वो 4 टेस्ट पेपर्स पे है. 4 students got 11. So how many times 11 is repeated? 11 is repeated 4 times. So 11 की जो frequency है, number of times repetition है, वो कितनी है? 4. So number of students actually represent frequency for these marks. And what is marks? These marks are x. Why this is x? Because these are the data points of the data set. We have 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21 and 22 as a data set. And each data set contains data points. So these are the data points. So we represented these data points as x as a whole. Individually when we write it as x1 equal to 11, x2 equal to 13. But as a whole I mention it as x. So marks is x, which are data points, and number of students represent the frequency. So what we need to do? We need to calculate average marks obtained by the student. In पूरी क्लास में जो आपके पास average marks आए हैं, students ने जो average marks gain किए हैं वो आपको find करने हैं. How we calculate the average marks? By hearing the word average, we click right to the mean, which we have calculated in the previous lecture. Mean and average are the same things. Mean is the same as we calculated the average. So we are given with marks, we are given with frequency, but how we get mean? Because we know that mean is summation x over n. We have the data points in the previous question, we sum them up and divided by the total numbers. But here we have something different, we have frequency. So this is a type of grouped data. So we need to calculate mean for the group data. See how we calculate the data mean for the group data. I have arrange them in a table where I have make marks as x, number of students at frequency f. So in order to calculate mean for the group data, there is a formula which is summation fx divided by summation f. This is the formula for calculating mean for the group data, and for representing mean we simply put a capital X and a bar on it. This is representing mean. Okay, so for calculating mean for the group data, we need to calculate fx, summation fx, which means that आपको fx पूरा कॉलम कैलकुलेट करना, बाद में उनको सम करेंगे तो वो summation fx हो जाएगा. और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपके पास है, आपको उसको सम अप करके उसको summation f की वैल्यू फाइंड करनी है. So how we get fx? आपके पास x given है, आपके पास frequency given है. Simply multiply these two columns and get f of fx. 11 into 4 will be equal to 44. 13 into 3 is 39. 15 into 7 is 105, and so on. We simply multiply x to the f and get a new column which is labeled as f of x. Now, what is summation? Summation means when we add up so many values, so we represent this as summation, which is a bigger notation for the sum. When we add up 4 into 3, then into 7, result into 16, 16 result into 4, answer plus 3, and so on. तो जब आप इन सब वैल्यूज़ को सम अप करोगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम है वो आ जाएगा 40. This is the thing which we need to calculate. Second thing is we need to sum this column of fx. When 44 added into 39, then answer will be added into 105, and the procedure repeated until we reach the last value of this column. So we get summation fx, which is equal to 676. You can calculate it at right within the
boundaries of the table, or you can write it separately, like summation f is equal to 40 आप इस टेबल के बाहर भी लिख सकते हो, summation f x भी आप बाहर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप टेबल के अंदर लिख रहे हो तो that is a good point. So we have calculated fx, summation fx and summation f. These are the two things which we need to calculate average or mean for this given data. Now here I put the values which we have calculated in the previous slide. So mean, you can say mean or you just write it as average. Average equal to summation fx over summation f. This is the formula of calculating mean for a grouped data. Putting in the values, for example, summation fx is 676, I put it here, summation f is 40. When these both are divided, we get an answer of 16.9, which means that the average mark of the student, the average marks of the English test paper is 16.9, or you can say that approximately 17. This is the average test score the students get in the class. So these are the questions which we have to done in this lecture. Hope you understand this lecture.